Okay, hey everybody, do watch this recording. In this video, I have explained Coulomb's law of attraction between the charges. It could be attraction or force of repulsion. It depends upon the nature of the charges actually. So I'm going to begin electrostatics. Quite a lengthy chapter actually. There are so many subtopics in this chapter, but I'm going to begin with the Coulomb's law of force of attraction and repulsion between the charges. So what is electrostatic actually? There are two words: static. Static means at rest. You should know the meaning of each and every word. Static means rest. So electrostatics is the study of charge. Electro means electric charge. Charge at rest. Okay, we know that when charge moves, for example when electron moves, it gives you electric current. That is known as current electricity. That is a different branch of physics. Electrostatics is a different branch. Here we study about the charge at rest. Yeah, so we know that equal charges repel. Electron electron, proton proton, they repels, but the opposite they attracts, right? So regarding this there is a formula. Well, it looks like gravitational force of attraction. We are aware of force of attraction between the masses, which is given by Newton's law of gravitational. Similarly, Coulomb also has very similar formula. Looks like a copy case, but it's not that actually. This is the force of attraction between the charges. There is a constant over there. This constant is 1 by 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is for free space, for vacuum. Okay, for vacuum. So it means in another medium, means in air or in water or in glass, we have to modify this formula. This is the simplest case. Okay, this formula can be used for vacuum only and not in glass or in another medium, because force will get this equation will get changed actually. So what is the reason for that this is what we need to learn here. Yeah, once again let's check the similarities. Looks like quite similar formula here, but this is force of attraction and this could be attraction or repulsion based on the charges. One more thing, the gravitational force does not depends upon the medium. Okay, it doesn't depends upon the medium. It means whether you are in vacuum or you are in air or in water, the force of attraction between two masses will not change, while electric field does depends upon medium. We have to modify it in different medium. So let's learn about it. This is how we represent the electric field between the, in case of different charges. Field lines are going away from the positive charge, going into the negative charge. Let me give you one example. In case of capacitor, these are the parallel plate capacitor. Okay, this is how we represent a capacitor. We will learn about capacitor as well. Suppose that this is having positive charge and this plate is having negative charge. So there is an electric field between the capacitor. It goes from positive to negative charge. Okay. Okay, this is the table. Well, let me tell you one thing. We have divided materials into two categories. One is conductor. Conductors you are aware of, they contain free charges like metal here at the bottom. So permittivity of the medium. What is permittivity? That is another topic which we will learn here in this chapter. Permittivity of the metal is infinite. Oh dear, what is the meaning of this actually? Okay, wait on. Let me tell you that materials are divided into two categories: conductor and insulator. Insulator. Now insulators are non-conductor.
But you know what, we will not use insulator word here. Another word for insulators are dielectric. Dielectric. In current electricity we use insulator word, but in electrostatics we use dielectric word for insulators. Okay, so this is what you need to know, that we have divided materials into conductor and dielectrics. So here vacuum, water, mica, glass, they are insulators or dielectrics. Yeah, let's learn more about dielectrics. As you can see here, dielectric is an insulating material. Example, paper, plastic, glass, or even water. Okay, mica. There are so many other examples. Okay, now let's learn what is the meaning of permittivity actually. Okay, permittivity. Permittivity means to permit, right? Well, it's quite different here. Okay, let's check what is the meaning of permittivity. Okay, check this one. If you keep any conductor, okay, conductor in electric field, this is the electric field, they have shown the direction. It's not allowing electric field to pass through it. See, it's opposing the electric field actually. Inside there is no electric field. Electric field is zero. So seems like this conductor is trying to oppose. Did I say oppose? Yeah. Seems like this conductor is trying to oppose or resist external electric field. Okay, that's why there is no electric field inside. But you know what? This is your homework. Okay, this is your homework. Just find out why there is no electric field inside. I'm not going to explain it here, otherwise things will become lengthy. So basically permittivity का meaning होता है opposition or resistance. So this is the definition which I got from the internet, I mean Google. Permittivity is the measure of material's ability to resist or to oppose an electric field and not its ability to permit. Generally permit का meaning होता है allow करना, right? तो हमें क्या लगता है permittivity का मतलब होता है कि वो electric field को allow कर रहा है, but here it's not like that actually. Permittivity का मतलब होता है oppose करना, resist करना. So that's why if you keep any conductor in electric field, inside the electric field is zero. But the reason is, this is not the correct explanation. This is your homework. Just find out why electric field inside is really zero. It is trying to oppose, but why? What is the reason? That you need to find out. Okay, now let me come back to this table once again. As you can see, they mention medium and its K. K is dielectric constant. Dielectric dielectric insulator. Okay, dielectric means insulator. Dielectric constant. So it's a constant for non conductors, mean insulator. मेटल के केस में इनफाइनाइट है एक्चुअली. मेटल के केस में इनफाइनाइट है. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है ना. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, सो अपोजिशन उसका जो है वो इनफाइनाइट है. अदर मटेरियल्स लाइक दिस दे आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़. अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट. लाइक आई सेड, Coulomb's law will be modified in different medium. The force of attraction between the charges in different medium will be different. So let's find out. This is the question from MTG fingertips. When air is replaced, suppose that two charges are there, negative and positive. Obviously there will be an attraction, electric field, electric force, right? There will be an attraction. So when air is, suppose that they are in air,
when air is replaced by dielectric medium of constant K. Suppose that any other dielectric material. So मैंने अभी आपको dielectric का meaning बताया. They are insulators like glass, like water, paper. Okay. So अगर मैं इन charges को दूसरे dielectric medium में रखता हूँ और dielectric constant K, तो जो force of attraction है उस पर क्या effect होगा basically. When air is replaced by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction which is there in air between the two charges separated by some distance. So जो force of attraction है between the charges वो increase होगा K times, same रहेगा जैसे कि gravitational force के केस में होता है. It doesn't depends upon the medium. या वो decrease होगा या फिर इंक्रीजेज 1 बाय के रेज टू 1 टाइम्स. तो बेसिकली क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज के टाइम्स. ओके, सो व्हाई डज इट हैपन, लेट्स फाइंड आउट. अच्छा, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यूजिंग दीज वैल्यूज. वाटर को ले लेते हैं. ठीक है, अगर दो चार्जेस है एयर में, ठीक है, एयर में 1/5 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर. एक्चुअली ना यहाँ पे K भी आता है, एप्सिलॉन K, लेकिन एयर के लिए K का वैल्यू कितना है 1, तो वो हम नहीं लिखते बेसिकली, वो हम नहीं लिखते, तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ. ओ डियर, कुछ और ही कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं. ठीक है ना, एयर के लिए हम लोग K नहीं लिखते क्योंकि उसकी वैल्यू वैक्यूम और एयर के लिए 1 है. नाउ लेट मी कीप these two charges. Suppose that there are two charges, they are in air. ना अगर मैं मीडियम चेंज करता हूँ, मैं उनको वाटर में रखता हूँ. ओके, वाटर में रखता हूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन के, क्योंकि वाटर के लिए के का वैल्यू कितना है 80 है. 80 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इट्स अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली. चलो, 1 सेकेंड चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन डैम. ठीक है ना, अगर मैं के को बाहर लेता हूँ, कांस्टेंट लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1/k टाइम्स, अंदर क्या रहेगा अभी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन. ठीक है ना. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअली. अच्छा, लेट मी इरेज दिस पार्ट हियर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो ये वाला जो इक्वेशन है मैं इसको यहाँ पे शो कर लेता हूँ. वाटर 1/k, और बेसिकली ये जो इक्वेशन है इन एयर, राइट, इन एयर का ही इक्वेशन है ना ये ओरिजिनल इक्वेशन. सो इसका मतलब है वाटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा 1/k टाइम्स. सो वाटर में 1/80 टाइम्स डिक्रीज होगा, माइका में 1/6 टाइम डिक्रीज होगा, ग्लास में 1/5 to 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. सो इफेक्ट ऑफ द मीडियम. व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड इन बिटवीन द चार्जेस. ओके, चार्जेस को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, देन व्हाट हैपेंस, rearrangement of the charges inside the dielectric medium takes place and the force between the same two charges decreases by the factor k. K is dielectric constant. So जो force of attraction है वो decrease होता है 1/k times, as you can see here. अगर k को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है देखो, मैंने चार्जेस के बीच में पहले एयर था, चार्जेस वेर इन द एयर, बाद में हमने उसको किसी दूसरे मीडियम में रखा तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गया 1/k टाइम्स. ओके, सो व्हाट इज़ द रीज़न एक्चुअली, ऐसा क्यों होता है. तो सेम रीज़न है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों हो रहा है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम ज़ीरो हो गया.
डाइलेक्ट्रिक के केस में ज़ीरो नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन ज़ीरो नहीं होता है। कंडक्टर के केस में ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई इनसाइड द कंडक्टर और इनसाइड द मटेरियल force is decreasing, electric field is decreasing? Let's find out. So basically, as we know that each and every medium has a tendency to resist electric field or electric force, उसको हम permittivity बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? Let's find out. Again, there is important thing here they mention. When dielectric medium is completely filled in between the charges, rearrangement of the charges inside the dielectric material takes place. Okay, let me read it again. Rearrangement of the charges inside the dielectric medium takes place and the net force between two charges decreases. देखो इसका मतलब क्या होता है? Okay, now let me explain it using this way. देखो parallel plate capacitor, बीच में there is nothing, there is air actually. एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 1 है। आई शोड यू दैट टेबल, इन दैट के वाज 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इफ आई कीप एनी मटेरियल हियर, फॉर एग्जांपल ग्लास रख देता हूँ या फिर पेपर रख देता हूँ, ओके, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लेट मी कीप एन एटम इन द एयर। तो हमें पता है कि एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ओके, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट व्हेन यू कीप देम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है बेसिकली, वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो चार्जेस क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। इसको पोलराइजेशन बोलते हैं एक्चुअली, पोलैरिटी। नाउ दे हैव गॉट द पोलैरिटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन another topic, I will explain it some another day, ओके, पोलराइजेशन। तो अभी देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। अब विद इन द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्ट होता है। सो इसका मतलब ये, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे ट्राई टू अपोज ईच अदर। सो जो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ट्राइंग टू अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस अपोजिशन इज नोन एज परमिटिविटी, opposition. So like I said, there is opposition. This opposition to external electric field by the material is known as permittivity. One more picture showing the polarization. ये without electric field है, as you can see they are randomly oriented, okay, but when you keep the material in electric field they are oriented in particular direction. तो जो positive charge है वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे। सो दे आर हैविंग देयर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दे आर अपोजिंग एक्चुअली, एंड ड्यू टू दिस अपोजिशन इन अ मीडियम फोर्स डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है बेसिकली, ओके। बोथ द थिंग्स आर गेटिंग डिक्रीज्ड. So same thing is happening here as well. This was the homework for you to find out why electric field is zero inside. Okay, वो भी मैं explain कर देता हूँ। हमें पता है कि negative charges they reside on the surface of the metal. So basically electric field inside zero ही होता है, even though if it is away from the electric field. लेकिन जब electric field में रखते हैं तो as you can see ये positive side है, ये negative side है। तो all the electrons are attracting towards the positive end and ions are towards the negative end. तो यहाँ पे ना basically opposite direction में electric field induce होता है to the external electric field, and they both are equal in opposite, hence electric field inside the conductor is zero. लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में ज़ीरो नहीं होता, ओके, थोड़ा रिड्यूस होता है बेसिकली लेकिन ज़ीरो नहीं होता,
क्योंकि मेटल का जो परमिटिविटी है वो इनफाइनाइट है, इट डजेंट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू गो थ्रू इट. वाइल वैक्यूम, वाटर, माइका दे आल्सो रेजिस्ट, लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है. एंड ड्यू टू दैट इन दीज मीडियम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विल गेट रिड्यूस्ड. तो जो कूलॉम्स लॉ है बेसिकली वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और मीडियम का जो प्रॉपर्टी होता है जिसको कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है बेसिकली, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिक्रीज होता है 1/k टाइम्स, क्योंकि मीडियम इज ट्राइंग टू अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसके कारण, अपोजिशन के कारण क्या होता है, फोर्स भी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है. ओके, सो आई एम कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, सॉरी दिस डेफिनेशन. देखो रीअरेंजमेंट होता है. ओके, लाइक आई सेड, पॉजिटिव चार्जेस वो एक साइड चले जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस एक साइड चले जाएंगे. देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फील्ड. ओके, सो इसके कारण क्या होता है बेसिकली, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो एयर में था वो मीडियम में आके डिक्रीज हो जाता है. सो लेट मी कंक्लूड. इलेक्ट्रिक force of attraction between the charges in air 1/4 pi epsilon k. अच्छा, एयर के लिए k का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली. ओके, अगर ये दो चार्जेस को मैं वाटर में रख देता हूँ तो वाटर के लिए k का वैल्यू 80 है, राइट. 4 पाई एप्सिलॉन के वाटर के लिए. तो वाटर जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा. तो इन वाटर देखो ये वैल्यू है ना 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाती है. ओके, सो इन डिफरेंट मीडियम आई हैव टू मॉडिफाई द इक्वेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस. So I hope you have understood. थोड़ा लेंदी चला गया actually, but the bottom line is in different medium the force of attraction or repulsion between the charges will be different, because you know what, these mediums are trying to oppose the external electric field or external electric force. और हर एक मीडियम का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है जो कि K से पता चलता है. K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो इस टेबल में जैसे कि बताया गया है, K फॉर वैक्यूम इज 1. लेट मी इरेज दिस पार्ट, है ना. वैक्यूम के लिए 1 है, वाटर के लिए 80 है. इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर में वो एज कंपेयर टू एयर 80 टाइम्स कम है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो मटेरियल मीडियम है इट इज़ ट्राइंग टू अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसके कारण फोर्स भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाता है. उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी.